Good morning students. This video session is for class 2nd students, subject mathematics, term 1, chapter number 3, and the name of the chapter is subtraction. This is our revision lecture number 1. Today's topics are properties of subtraction, multiple choice questions, true or false, write the missing numbers and fill in the blanks. So let's start from properties of subtraction. Now the first one is subtracting 0. So if we subtract 0 from any number, we get the number itself. बेटा अगर हम किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, then we will get the number itself. See how? If you have 6 chocolates and you have not given any chocolate to anyone, so how many are left with you? That is 6. Means 6 minus 0 is equal to 6. Okay, so हमारे पास 6 चॉकलेट्स थी और उनमें से हमने चॉकलेट किसी को भी नहीं दी, तो कितनी चॉकलेट्स हमारे पास रही? 6. Okay, so when we subtract 0 from any number, जब हम 0 subtract करते हैं किसी नंबर में से, we get the number itself. तो हमें वही नंबर मिलता है. Okay, like 7 minus 0. So here 7 minus 0 is equal to 7, the number itself. And here the number is 7. So our answer is 7. Now in B part, 41 minus 0 is equal to dash. So here we have to subtract 0 from 41 and here the number itself is 41. So we will write answer 41. Understood beta? Now in C part, dash minus 0 is equal to 86. हम किस में से 0 माइनस करें कि हमारा आंसर 86 आ जाए? So that is 86. Understood beta? Now in D part, 9 minus dash is equal to 9. 9 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 9 आ जाए? That is 0. Now in E part, 799 minus 0 is equal to dash. So here we are subtracting 0 from 799. So we get the number itself, that is 799. Now 850 minus dash is equal to 850. So here beta, what we should subtract from 850 to get 850? So 0. Understood? Now the next property is subtracting 1. So if we subtract 1 from any number, we get the previous number of counting. What do you mean by beta previous number? Previous number का मतलब होता है पहले वाला नंबर. ठीक है, जब हम किसी भी नंबर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें हमारी काउंटिंग का प्रीवियस नंबर मिलेगा. लाइक if I am subtracting 1 from 6, so I'll get 5 and 5 is the previous number of 6. Understood? Now here in A part it is given 20 minus 1. So here we have to subtract 1 from 20. So we get previous number of 20 and that is 19. Okay. Now in B part, 15 minus 1. So again we are going to subtract 1 from 15 and what is the previous number of 15? That is 14. Understood beta? Now in C part, 179 minus dash is equal to 178. So what we will write here? 1. Understood beta? 179 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा आंसर आ जाए 178. So that is 1. क्योंकि 178 is the previous number of 179. Now in D part, 456 minus 1. So here again we are subtracting 1 from 456 and what is the previous number of 456? That is 455. Now in E part, 10 minus 1. So 10 is the 2-digit number. Okay, and here we are subtracting 1 from it.
So which number we will get? That is number 9, the greatest single digit number. Now the next one is subtracting number from itself. अब यहाँ पे बेटा इसमें हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वही नंबर जो नंबर हमें दिया हुआ है. लेट्स सी, इफ वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ वी गेट 0. अगर हम सेम नंबर को उसी नंबर में से माइनस करेंगे देन आवर आंसर इज 0. सपोज यू हैव 4 bananas, okay, and you have given all bananas to your sister, so how many are left with you? That is 0, है ना. So let's see how. 40 minus 40. So here ones place is 0 and tens place 4. Here again ones place 0 and tens place 4. So when we subtract 40 from 40 we'll get 0. Okay, now in B part 256 minus 256. So this is the same number, both numbers are same, so our answer is 0. Now in C part 90 minus dash is equal to 0. अब यहाँ पे बेटा हमें आंसर 0 ऑलरेडी गिवन है, तो हम 90 में से क्या माइनस करें? What should we subtract from 90 to get 0? So the number itself, and that is 90. Now in D part 451 minus 451, both numbers are same, so our answer is 0. Now in E part dash minus 34 is equal to 0. कौन सी नंबर में से हम 34 को माइनस करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए? 0. So that number is 34. ठीक है, जब हम 34 में से 34 को माइनस करेंगे ओनली इन दिस केस वी गेट 0, है ना. जब हम सेम नंबर में से वही नंबर माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर 0 आता है. ओके बेटा. नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो हियर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस, ओके, एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. Now the question number 1, it is given when we subtract 0 from any number we get dash number. So here our options: A 0, B number itself, C 1 and D both A and C. So beta again we will read it. When we subtract 0 from any number, जब हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नंबर में से, लाइक आई हैव 6 bananas, ओके, एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम 6 bananas. सो हाउ मेनी बनानाज आर लेफ्ट? मैंने किसी को कोई बनाना नहीं दिया, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट विद मी? दैट इज द नंबर इटसेल्फ, यानी 6 minus 0 is equal to 6. So our answer is the number itself, and it is in option number B. So option B is correct. Now in question number 2, when we subtract 1 from any number, we get dash number. So here beta our options are A 0, B number itself, C next number, and D previous number. So here we are subtracting 1 from any number. Suppose you have 7 toffees and you have given 1 toffee to your sister. So how many are left with you? 7 minus 1 is equal to 6, and 6 is the previous number. Okay beta. So our option number D is correct, previous number. Now question number 3, subtract 70 from 90, and our options are A 0, B 20, C 10 and D 1. So here beta we have given subtract 70 from 90. हमें 70 को subtract करना है 90 में से. Okay, so here 90 is the greater number and 70 is lesser number. Okay, so we will solve here. First of all we will write places. So here 2-digit numbers are there, so we will write 2 places, ones and tens. Okay, now we will write 90 under it and then 70. Now we have to subtract, so we have always start from our
ones place. So here at ones place we have given 0 minus 0, and 0 minus 0 is 0, and here 9 minus 7. So 9 minus 7 is 2. So our answer is 20, and this is in option number B. So our answer is option B, 20. Now in question number 4, it is given after subtracting the numbers the result obtained is called the dash. जब हम बेटा नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, और वो जो रिजल्ट हमें मिलता है उस रिजल्ट को हम क्या बुलाते हैं? ओके, ऑप्शंस आर ए सब्ट्रैक्शन, बी डिफरेंस, सी एडिशन एंड डी नंबर्स. सो बेटा what do we called the result of subtraction? And that is called the difference. Okay, so option B, difference, is correct. Now in question number 5, it is given if we subtract 45 from 80, then the difference is dash, and our options A 35, B 45, C 0 and D 34. So here beta we have given two numbers and we have to subtract 45 from 80. So here we will solve it. Okay, so first of all we will write two places because two digit numbers are there, ones and tens. Now we will write 80, and after that we will write 45 under it. Now we have to start from our ones place digit. So here 0 minus 5, and that is not possible. So here ones place will take borrow from tens place. Okay, and this number will become 10. हम 0 को काट के इसकी जगह क्या लगा देंगे बेटा? 10, क्योंकि जब भी वंस प्लेस बोरो लेता है 10 से तो वो अपना 110 उसको देता है, तो 110 मीन्स 10. ओके, नाउ अब जब टेंस प्लेस ने 110 अपना दे दिया तो हाउ मेनी टेंस आर लेफ्ट विद 8? अब 8 ने 1 अपना दे दिया तो हाउ मेनी आर लेफ्ट विद इट? दैट इज 7. सो विल राइट 7 हियर. ठीक है, तो जब भी हम बोरो देते हैं तो हमेशा याद रखना है कि टेंस प्लेस अपना 110 जो है वो वंस प्लेस को बोरो देता है, और अपने में से वो 1 माइनस करेगा, क्योंकि इसके पास 8 टेंस से 8 टेंस में से 110 इसने दे दिया, तो हाउ मेनी टेंस आर लेफ्ट? दैट इज 7. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. नाउ कीप 10 इन योर माइंड and open your 5 fingers. Now we have to speak backward counting. Beta, always remember in subtraction we have to speak backward counting. Okay, 9, 8, 7, 6, 5. So we will write 5 here at ones place column. Now 7 minus 4. So keep 7 in your mind and open your 4 fingers. Now we have to speak backward counting. 6, 5, 4, 3. So we'll write 3 here. So what is our answer? That is 35, and this is in option number A. So our option A is correct, 35. Now in question number 6, when a number is subtracting from itself, the difference is dash. जब हम बेटा एक नंबर को उस नंबर में से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा? ऑप्शंस आर A 1, B same number, C previous number and D 0. So here suppose you are subtracting 6 from 6. So how much are left with you? That is 0. So option number D is correct. Okay beta. So when we subtract a number from the number itself, we always get 0. Now in question number 7, it is given 9 tenths minus 2 tenths is equal to dash, and our options are A 7, B 7 tenths, C 70 and D both option B and C. So here beta you can see in both the numbers 9 tenths and in 2 tenths. Okay, we have given the same place tenths, so we can subtract it easily. 9 tenths minus 2 tenths means 9 minus 2, that is 7, and tenths we will write after that. So option B is correct, 7 tenths. Okay, but when we solve it, then 7 multiplied by 10 and 7 tenths are 70. It means option C is also correct. Okay,
So option B and option C both are correct. Okay, so in option number D it is given both option B and C. So we can say that option D is correct. Both option B and C, क्योंकि ये जो हमारा D वाला ऑप्शन है इसने हमें बताया है कि ऑप्शन B और ऑप्शन C दोनों ही करेक्ट हैं. ओके, क्योंकि हमें वन ही आंसर देना है बेटा. चार हमारे पास ऑप्शन है, चारों में से वन आंसर जो है वो करेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर बी भी करेक्ट दिखा रहा है, सी भी करेक्ट दिखा रहा है, बट डी वाले ने बताया कि हमारे पास ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, इसलिए हमने आंसर में क्या लिखा, ऑप्शन डी. अंडरस्टूड. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 ones minus 2 ones is equal to dash. Options are 6 ones, B 4, C 9 and D 2. So here in both the numbers it is given ones. Here also it is given ones, and ones means we have to multiply 8 by 1, that is equal to 8, and 2 multiplied by 1, that is equal to 2. Okay, so 8 minus 2 is equal to 6. Okay, we can write it 6 ones or 6. Both are correct. So option A is correct here in this question. Now in question number 9, there were 20 books in a bag. एक बैग में बेटा 20 बुक्स थी. इफ 9 बुक्स आर टेकन आउट, अगर उनमें से 9 बुक्स जो थी वो बाहर निकाल ली गई, हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट इन द बैग. तो बताइए कि उस बैग के अंदर कितनी बुक्स लेफ्ट रह गई. और जब भी हमें लेफ्ट वर्ड गिवन होता है बेटा इन द क्वेश्चन, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, एंड ऑप्शंस आर A 20 बुक्स, B 11 बुक्स, C 12 बुक्स एंड D 9 बुक्स. सो हियर we have total 20 books. Okay, and how many are taken out, that is 9. So keep 20 in your mind and open your 9 fingers. Now we have to speak backward counting. Let's start. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. So how many books are left? That is 11 books, and that is in option number B. So our option number B, 11 books are correct. Now in question number 10, Radha had 30 toffees with her. राधा के पास कितनी टॉफीज थी? 30 टॉफीज. She gave 7 toffees to her friend. और उसने उनमें से 7 टॉफीज अपनी फ्रेंड्स को दे दी. Now how many toffees are left with her? तो बताइए अब उसके पास कितनी टॉफीज रह गई. Again I am reading. Radha had 30 toffees with her. राधा के पास 30 टॉफीज थी. उसने 7 टॉफीज अपनी फ्रेंड को दे दी. How many toffees are left with her? तो बताइए उसके पास कितनी टॉफीज रह गई. So here left is given. So we have to subtract both the numbers. So options are A 12, B 7, C 30 and D 23. So now keep 30 in your mind and open your 7 fingers. So let's start backward counting. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. So how many are left with her? That is 23. So our answer is option D, 23 toffees. Okay beta. Now the next is write true or false. So here beta true means करेक्ट. ओके, जो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी उसके लिए हम ट्रू लिखेंगे, एंड विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉर दैट वी विल राइट फॉल्स. सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन 54 minus 6 is equal to 44. So first of all we will solve it. Okay, so keep 54 in your mind and open your 6 fingers. Now we have to speak backward counting. 53, 52, 51, 50, 49, 48. So our answer should be 48, but it is given 44. So this statement is false. So we will write false for it. Now in question number 2, it is given 23 minus 23. So both numbers are same beta, and we know that when we subtract the same digit from the number itself, okay, so we get 0. So this statement is correct. So we'll write true for it. Now in question number 3 it is given the difference between 890 and 340 is 250.
So here we need to solve it. So we will solve it here. Okay. And our option, yes. First of all, we will write 3 places. Okay. And the difference between 890 and 340. So which one is greater number? That is 890. So first of all, we will write places. 3 places, ones, tens and hundreds. Then 890. And after that 340. Now we will start from our ones place. 0 minus 0, that is equal to 0. 9 minus 4, that is equal to 5. And 8 minus 3. Keep 8 in your mind and open your 3 fingers. Now we have to speak backward counting. 7, 6, 5. So we'll write 5 here. So our answer should be 550. But it is given 250. It means this statement is wrong. So we will write false for it. Understood, beta? Now in question number 4, it is given when we subtract 0 from any number, we get number itself. So beta, what do you mean by it? कि जब हम किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही आंसर मिलता है. So let's start. If we subtract 0 from 9, so we will get 9. So the statement is correct. So we will write true for it. Now in question number 5, it is given ones place digit always takes borrow from tens place digit when needed. जब वंस प्लेस को जरूरत होती है बेटा, तब वो किससे बोरो लेता है? टेंस प्लेस डिजिट से. यस, वंस प्लेस डिजिट जो है हमेशा टेंस प्लेस डिजिट से बोरो लेता है और टेंस प्लेस डिजिट हमेशा बोरो किससे लेता है? फ्रॉम हंड्रेड्स प्लेस डिजिट. अंडरस्टूड बेटा? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो विल राइट ट्रू फॉर इट. ओके. Now the next is write the missing number. Here in A part it is given 95 minus dash is equal to 91. 95 में से हम क्या माइनस करें कि 91 आंसर आ जाए? तो अभी हमें क्या करना है बेटा? 95 से बैकवर्ड काउंटिंग बोलनी है. कब तक? जब तक 91 नहीं आता है. सो लेट्स स्टार्ट. आपने अपनी फिंगर्स ओपन करनी है. ओके. 94, 93, 92, 91. So how many fingers you have opened? That is 4. So we'll write 4 here. So 95 minus 4 is equal to 91. Now in B part, 44 minus 9 is equal to dash. So here we have to keep 44 in our mind and open your 9 fingers. Now we have to speak backward counting. Let's start. 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35. So we will write 35 here. Okay. Now in C part, 89 minus dash is equal to 84. So here again, keep 89 in your mind and you have to speak backward counting till 84. ठीक है? जब तक 84 नहीं आता है, we have to speak. Let's start and open your fingers accordingly. 88, 87, 86, 85, 84. So how many fingers you have opened? 5. So we'll write 5 here. Understood? Now the next is 530 minus 530. So both numbers are same. So we will write 0 for it. Okay. Now in E part, 75 plus 10 is equal to 85. Beta, this is the subtraction fact, or you can say this is the relationship between addition and subtraction. तो इसका क्या हमारा होता है बेटा? जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, वट एवर इज आर आंसर, जो हमारा आंसर आता है, अगर हम उस आंसर में से कोई भी एक डिजिट माइनस करते हैं, देन वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर. ओके. सो यहाँ पर 75 plus 10 is equal to 85. It is given. Okay. Now if we subtract any number from this 85, then we will get the next number. So here it is given minus 75 is equal to 10. So here what we have to write? We have to write this number, that is 85. Now in F part, 9 plus 5 is equal to 14. Okay.
and 14 minus dash is equal to 9. तो यहाँ पर हमें 9 और 5 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 14. अब सबसे पहले हमने लिखा 14. अब 14 में से क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 9 आ जाए? तो ये हमारा आंसर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ही है एंड दैट इज 5. वी विल राइट 5 हियर. जो नंबर हमें यहाँ नहीं दिया होता है दूसरी तरफ, वही नंबर हमें यहाँ लिखना होता है. देखिए यहाँ पे 75 और 10 दोनों नंबर हमें यहाँ दिए हुए थे तो हमने 85 लिखा. यहाँ पे 9 और 5, ठीक है, और 14 है नंबर्स, और 14 और 9 यहाँ गिवन है जिसमें से 5 नहीं दिया हुआ था. सो हियर वी हैव रिटन 5. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. इन ए पार्ट द डैश इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. बेटा साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है? दैट इज दिस साइन. ओके. नाउ इन बी पार्ट 870 minus 1 is equal to dash. So beta, when we subtract 1 from any number, we get the previous number. And what is the previous number of 870? That is 869. Now in C part, 90 minus 1 is equal to dash. Again we are subtracting 1 from 90, so we get the previous number and that is 89. Now in D part, 561 minus 7 is equal to dash. So keep 561 in your mind and open your 7 fingers. So let's start backward counting. 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554. So we will write 554 here. Now in E part, 78 minus 9 is equal to dash. So keep 78 in your mind and open your 9 fingers. Now let's start backward counting. Yes, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69. So we will write 69 here. Now in F part, 43 plus 8 is equal to 51. So here it is given 51 minus 43 is equal to dash. So beta 43 और 51 हमें यहाँ दोनों numbers given है. So we will write here 8. Understood? 51 minus 43 is equal to 8. Clear? Now today's homework is do revision assignment number 1 of chapter number 3 subtraction term 1 given on Edquark website. ओके बेटा, Edquark website पे मैम ने आपके लिए रिवीजन असाइनमेंट बनाया है. यू नीड टू सॉल्व इट एंड सेंड इट ऑन माई मेल ID. ओके बेटा, थैंक यू.